You're watching NewsX. My name is Vineet Malhotra. The Indian Space Research Organization ISRO is embarking to achieve a successful soft landing on the moon with the launch of Chandrayaan 3. The spacecraft is now primed for its scheduled moon landing on the 23rd of August. The endeavour places India on track to become the fourth nation globally to achieve this remarkable milestone, joining the company of the United States, Russia and of course China. The mission was launched effectively on the 14th of July via the GSLV Mark III LVM-3 heavy lift launch vehicle from Satish Dhawan Space Center in Andhra Pradesh's Sriharikota. It is poised to touch down on the moon's exterior come August 23rd. It represents India's third lunar expedition and its second endeavour to achieve a delicate landing on the moon's terrain. As we head close to the big day, we are being joined by my colleagues from different parts of the country, speaking to the citizens of our country, expressing how they feel about the project and how excited they are about this amazing feat. First up, my colleague Akshat is joining us at this point in time. Akshat, if you can hear me, he's at India Gate at this point in time in Delhi. And we're also joined by Roshali and Jayaprakash Ramaiya will be joining us from Bangalore. Ajay Jandyal is with us from Jammu as well. Nikita Sareen is outside of La Martiniere College in Lucknow. I'm going to go to Akshat Gupta first. Akshat, important for you to understand from the people around you as to how they feel about this mission. This is something which is going to be taught in schools. This is something which is going to be mentioned in folklore, and this is something which is going to take India to the top of the space game. Try and understand, how proud does the next Indian feel around you? Of course, India's groundbreaking lunar mission is aiming to achieve a monumental event. Well, after completing all the maneuvers yesterday, today, the Vikram lander and the propulsion module got separated, making it a significant step in its quest to touch down the moon's surface on August 23. Well, we have a lot of people, of course, women, to speak on the India's lunar mission. So we will just speak to them and try to understand from them as to how they actually feel about this feat. Ma'am, आप हमें सबसे पहले अपना नाम बताइए. नमस्कार, मेरे नाम MS मंजुला. आई एम फ्रॉम कर्नाटका, बेल्लारी. फर्स्ट ऑफ ऑल बिलेटेड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आपको भी. चंद्रयान जो है आज एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन जो है चंद्रयान ने कंप्लीट किया. कैसा लग रहा है आपको इस लूनर पूरे मून मिशन के बारे में? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लेडी सोचा तो कुछ भी कर सकता है. सेकेंड टाइम फेल्यूर हो गया, थर्ड टाइम लेडी ने साहस किया, वो हो गया, ख़त्म हो गया करके सभी लोग आतंक में बैठने के टाइम लेडी ने सक्सेस किया. सभी लोगों को ग्रेटफुल. सभी लेडी सोचे तो कुछ भी कर सकती. उनको हमारे सभी महिला कांग्रेस की तरफ से सभी लोगों उनको धन्यवाद. आप लोगों ने तिरंगा हाथ में ले रखा है, तिरंगा फहराया जाएगा चांद पे, ये पूरी उम्मीद है. आप हमें मैम बताइए, आप कहाँ से आए हैं और आपको कैसा लग रहा है इस मून मिशन के बारे में? नमस्ते, मेरा नाम तारा चंदन है. मैं एडवोकेट हूँ. मैं हासन से आई हूँ. फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर देवेगौड़ा जी के प्लेस से मैं यहाँ के हूँ. तो मुझे अभी चंद्रयान जो है, वी फील प्राउड. अभी जो भारत माता है, भारत माता की बेटियाँ जितने भी हैं वो बहुत हिम्मतदार है. जो भी सोचते हैं वो सक्सेस कर देते हैं. हमारा विश्वास है कि आगे जाके भी महिला बहुत कुछ साधन करेंगे और चांद में जाके हम फ्लैग होस्ट करेंगे. मैम, ये स्कूल में भी जो है बाद में पढ़ाया जाएगा, तो आपको क्या लगता है बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है इसको समझना, और आपको भी कैसा फील हो रहा है इसके बारे में? इसके बारे में तो बहुत अच्छा फील हो रहा है. फर्स्ट बार में भी हमें देखे उसकी उम्मीद में थे, लेकिन फिर हमने ना उम्मीद होना पड़ा. फिर सेकेंड टाइम भी बहुत उम्मीद थी, फिर तब भी हमें थोड़ा सा दर्द हुआ उसके बारे में. लेकिन अब तो सक्सेस होने की दुआ कर रही, इंशाल्लाह सक्सेस होगा और उसकी जो भी नॉलेज है वो हमारे बच्चों तक पहुंचा. उनका फ्यूचर भी आगे बहुत ब्राइट है. सो वी विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम मोर वुमेन हियर. मैम, आप हमें बताइए, आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में, मिशन के बारे में? सर, अच्छा लग रहा है सर. So how are you feeling, ma'am? Now the Chandrayaan is going to touch down the moon's surface. So how are you feeling about it, and how do you think, like, why is it important for the children in the schools? I'm proud of you. You are proud of it? Proud of you. Successful. सो मैम, आप हमें बताइए, आपको कैसा लग रहा है? चंद्रयान जो है मून पे टच करने वाला है. 23 अगस्त जो है डेट बताई जा रही है.
कितना आप लोगों को गर्व महसूस हो रहा है इंडिया के ऊपर? सर लेडीज़ तो हर इसमें आगे है सर, हर जगह भी आगे है सर, और भी अच्छे कामों में फर्स्ट क्लास आती सर, हम सब यकीन है सर, गारंटी है। हमारी सबकी दुआ है इंशाल्लाह सर। बेस्ट ऑफ लक। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, So we feel proud. So the women in all fields they will be success. क्योंकि चंद्रयान 2 जो एक सिग्निफिकेंट स्टेप पे पहुंच के जो है क्रैश कर गया था, तो अब उसके बाद बहुत ज़्यादा उम्मीद जो है जताई जा रही है, क्योंकि इंडिया जो है 4th नेशन बन जाएगा रशिया, यूएस, चाइना के बाद ऐसे टच डाउन करने पे। तो उस ग्लोबली अगर देखें तो आपको क्या फील होता है? I wish it may be successful. So भारत माँ कभी भी साथ रहती है, भारत माँ की बेटियाँ हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे, रहना चाहिए। साइंस और टेक्नोलॉजी को भी काफ़ी बूस्ट देगा ये, तो क्या लगता है पिछले कुछ सालों में कितना साइंस और टेक्नोलॉजी को कितना आगे बढ़ा है? आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ा, हमारे से ज़्यादा हमारे बच्चों को और ज़्यादा इंडिया में लाए सोच राजीव गांधी की वजह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा। हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी की उसकी पहचान कराए सोच हमारे राजीव गांधी। उसके बाद से उसे चलाले को जाने का काम है, जो भी उनकी प्लेस में आते जा रही है उन्हें बढ़ाते जा रही हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की जो भी पहचान है जो हमारे इंडिया में वो राजीव गांधी की तरफ से। So as you heard, the people out here, Vineet, they are holding the tricolor in their hands. Of course, upbeat about that the Tiranga will fly high on the moon, and of course the designated date for the touchdown of the Chandrayaan 3 on the moon is August 23. And just to give you a little bit perspective as to why the separation also of Vikram from the propulsion module is significant, the rover which will come out of the Vikram will roam around the moon surface and will send out stunning images which will not only be stunning pictures, but it will also give an insight into moon's geological structure. So the Chandrayaan 3 mission is not only just about landing, it's also more about the discovery. While the whole world watches with the bated breath, the Chandrayaan 3, the lunar mission, is making long strides into the lunar mission to touch down on the moon surface on August 20th. Let me also rope in Nikita Sareen. She's joining us live at this point in time from Lucknow. Nikita, how's the Josh where you are? Figure out from people on what their feelings and emotions pertain to when it comes to India landing on the moon. This is obviously no small feat. It is also something which has had the backing of the government. It has had the backing of the people. So let's hear it from the people. Well, Vineet, again, a historic day for all Indians as lunar mission Chandrayaan 3 has completed 5th and final stage. And also now you can say approx 150 kilometers away from moon. We have some people with us. We have Milind with us, a scientist, would like to add their opinion. What are they saying? Milind, again a big day. 5th stage and final stage is being completed. Kya lagta hai? Will it make a soft landing? Definitely, it's a historical day for the entire India, for all the Indians, because today is the day when our lander Vikram is going to detach itself from the spacecraft. It was launched on July 14th this year, and marking the date of July 14th all the way to this date, this is the very exciting stage when the lander will come to the moon, and if it gets a soft landing, which I am 100% sure, because we have better engines this time. We have learned a lot from the mission which was in the Chandrayaan 2, where we actually failed during the last peak hours of the mission, and this time with all the improvements, with the system upgrades, we are going to land and we are going to do a soft landing. And once the Pragyan, the rover, is going to come out, is going to be the historical day for the country, and India is going to dominate the space mission in the world, and I am very sure about it. So you are also a scientist. What are your guts feeling? Actually a pride movement, and you people can understand it very well, that what people think. And the director lady from Lucknow only, Ritu, is holding all this mission, the only director. She is on and on making us proud.
Yes, of course, it's a great moment, and it's especially from Lucknow, like the director is from our city. Yeah. And it's a great thing to see that how swiftly we have improved the space mission. And now this time, with all the advancements, I'm absolutely sure we're going to achieve this mission, and it's going to be a moment of pride for the entire city, the entire state, and the nation, of course. And it's a very exciting thing, and I've been as a scientist with all the great minds with me here. It's something historical day we always wanted to see, and today it's in reality. And I think around 23rd of this month, August, we're going to make it. We're quite sure about it. So we'll wait for 23rd. Vineet, we have some students, we have some small kids with us holding flags in their hand, and you can see how excited they are. What's your name? Garvit. Garvit. What's your feeling? 23rd is the day, and today mission completed 5th and final stage. Well, it's going to be a really historical moment for India, and I'm pretty sure there's going to be a soft landing. Yeah. And it will be a historical moment also. I'm pretty sure like India will succeed in the space mission. What are your opinion? What's your name? Shivan. Shivan, what do you think? Will it be a soft landing? Of course, it's India. It will be a soft landing, and I feel very proud of this moment. And I, being as an Indian, I feel the most superior. Yes. Vineet, well, we have some more. कैसा लग रहा है? What's your name? Advik. Advik, क्या लगता है regarding Chandrayaan 3? Chandrayaan 3 will land softly because we have one more kid, Vineet, and just look at his dress. All full astronaut. क्या लगता है? ये dress आज पहन कर आया? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. Well, Vineet, I can see excitement among kids standing here. 23rd is the date when India will gonna create a history, and people are more or less saying that it will be a soft landing. Over to you, Vineet. Absolutely. Everybody has done their homework. They know exactly what India is expecting on the 23rd of August. Rushali, my colleague, is also with us at this point in time from Gateway of India in Mumbai. I can see scores of people behind you, Rushali. I think you've already warmed them up to the topic of discussion. Please take it away and check with them. What are their feelings for this big, big day? Yes, Vineet, I'm standing at the Gateway of India, the iconic place of Mumbai, where we have normally gather people here across the nation. We have few people over here. We'll talk to them. What's your name? You're coming here from my name is Dev Kewat, and I'm from Surat, Gujarat. Okay. Yeah. So how you are excited about Chandrayaan 3, which is going to make a history, because all are waiting for 23rd, but it has crossed a significant level for which everybody is hoping that this will be a smooth landing. ये हमारे इंडिया के लिए और पूरे विश्व के लिए बहुत अच्छी घटना है, और मतलब बहुत प्राउड मोमेंट है पूरे इंडिया के लिए कि हमारा चंद्रयान वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट टाइम अभी हम तिरंगा वहाँ पे लहराने जा रहा है. थैंक यू. कितना प्राउड फील कर रहे हैं आप? बहुत ज़बरदस्त प्राउड फील कर रहे हैं हम लोग. आप यहाँ पे पूरी फैमिली को लेकर? हाँ, पूरी फैमिली, मदर, फादर, बच्चे, सब लोग हैं. आपकी क्या भावनाएं हैं? बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है. प्राउड फील कर रहे हैं? Yes, it was very marvelous moment for me as an Indian citizen. I am also very much passionate about it. So I also want to do something for the country, so I can represent it. But what you feel that it has crossed a significant mark, and we all are hoping that it will be a smooth landing. What do you feel? Yes. It will be a smooth landing. Yes, it will be. Yes, I am 100% sure that it will 100% successful because our scientists had worked so much hard. They are burning that midnight oil. So I am definitely sure that it will be successful. भारत माता की जय. भारत माता की जय. वंदे मातरम. वंदे मातरम. क्या लगता है आपको कि ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट रहेगा इस बार? भारत जो है वो हाँ, इसके लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, और चंद्रयान विक्रम जो अभी लैंड करने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत ही खुशी हो रही है और गर्व हो रहा है. हम इस मूवमेंट के लिए इंतज़ार कर रहे थे, वो मूवमेंट अभी आने वाला है, और बस उसी खुशी में खड़े हैं और भारत माता की जय बोल रहे हैं बस. So
Vineet, you can see over here people have gathered here from the different parts, and how excited you are for very excited, ma'am. Actually, congratulations for all Indians that we are having very proud moment at this time. I am very proud. Happy Independence Day to all. Thank you. So sometimes when directly you ask them questions, so they are little bit they are overexcited, they don't want to say, but yes, they are very much happy for this proud moment, that is the Chandrayaan 3 has crossed a significant level. Every Indian is rather hoping that it will be a very smooth landing, and this time India will mark his presence on the moon, and this is something that very proud moment for every Indian over here. And as we are standing outside the Gateway of India, this is the place where we have a footfall every evening, and not only from Mumbai but the different parts of the country, people come over here to enjoy the atmosphere. And right now what you can see over here, that the vibe is saying that every Indian is waiting for the moment when our flag will be reached at the surface of the moon. So certainly for that historical moment, everybody is waiting, and everybody is hoping that this will be a smooth landing and Chandrayaan 3 will be very successful. All right, that's absolutely right. Let me also cut across to Ajay Jandyal, who's joining us from Jammu at this point in time. Ajay, I can see you have the Tiranga in your hand. There are people that you're flanked by. Speak with them. I can see the excitement on your face, and it's obviously contagious to the people around you as well. Try and speak to them and figure out what does this day, or what does 23rd August mean for them, and what does this entire endeavor that India has undertaken mean for them. Vineet, you rightly said this Tiranga, holding this Tiranga is always a proud moment for any Indian, wherever they live. And this time when it is going to be a soft landing of Chandrayaan at moon, definitely it is going to take our aspiration, take us to the next level. And that is why it is very important. And we have with us some people, here. Let's speak to them. What they say. क्या लगता है कितना बड़ा मिशन ये जो कामयाब होने वाला है, और कितनी बड़ी भारत के लिए कहूँगा कि एक नया स्टेप, एक नई ताकत और एक नया मकाम होगा ये? देखिए, ये सभी समस्त भारतीयों के लिए, 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। चंद्रयान 2 की असफलता के बाद लोगों में और उत्सुकता बढ़ गई थी कि आखिर इसका जो है सफलपूर्ण जो लैंडिंग होगी कि नहीं होगी, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत मशक्क़त करके और इसको सफल बनाने में पूरा योगदान दिया है। इसका श्रेय सिर्फ़ और सिर्फ हमारे वैज्ञानिकों को जाता है, जिन्होंने तीसरी बार सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाई है। और अब ये देखना होगा, लैंडिंग 23 वही कह रहा हूँ कि 23 तारीख को जो है वो पूरे देश में एक जश्न की तरह मनाया जाएगा, क्योंकि पहली बार हमारे हिंदुस्तान का कैप्टन सतीश जी जब चंद्रयान पे गए थे, तो भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनसे पूछा था कि आपको भारत ज़मीन से कैसे लगता है, ऊपर से आसमान से देखते हुए तो भारत कैसे लगता है? तो उन्होंने एक ही बात कही थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हमें पूरा यकीन है कि 23 तारीख को सफलतापूर्वक लैंडिंग होगी और भारत एक बार फिर विश्व में अपना नाम बनाएगा, विश्व में नाम बनाएगा। आपको क्या लगता है युवाओं के लिए कितनी प्रेरणा है? क्योंकि इस बार देख रहा हूं कि हर कोई जो है वो चंद्रयान के बारे में जानना चाहता है, उसे ट्रैक कर रहा है। देखिए, चंद्रयान आज के इस टाइम जो मेन विषय है, चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हैं, सबके लिए वो एक मेन अट्रैक्शन बन चुका है। आज हर बच्चा बड़े सब चंद्रयान के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 की में असफलता मिली थी, लेकिन उसके बाद जो इतनी जल्दी फिर से जो चंद्रयान 3 उसको लॉन्च किया गया और उसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। जैसे हमने कल देखा, लेज़र बीम के साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा तिरंगा जो चंद्रयान पर आप भाई साहब ने भी कहा कि लैंडिंग हो चुकी है। एक तरफ से देखा जाए तो लैंडिंग हो चुकी है, क्योंकि हमारा तिरंगा कल ही उस पे चंद्रमा पे छप चुका था और वो पूरा विश्व उसको देख चुका है, और वो एक तरफ से मान भी चुके हैं कि हमारी लैंडिंग हो चुकी है। हम पूरे भारतीयों ने अपने मन से उसको मान लिया है कि हमने वहाँ पर लैंडिंग कर ली है। लेकिन 23 तारीख को इसका फाइनल दिन है
उसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, सारे युवा भी इंतज़ार कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तानी जो इंडिया में हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री में रहते हैं, वो इस दिन के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। नई ऊंचाई पे भारत पहुंचने वाला है लग रहा है। जी जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। हमें 23 तारीख का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। हम एक ही साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। So these are the pictures from Jammu where people are very excited and they are waiting for the land of Chandrayaan, and definitely it is going to not only take India, name of India to the top, but definitely the youngster of the country, 140 crore people of country, they are going to be at the new height of the world. You're absolutely right, Ajay. That sums up what exactly this sentiment is all about. Thanking all my colleagues for joining us from different parts of the country and taking us through what's going on in the common man's head today. And Ajay Chandrayaan, my colleague, has also filed a ground report where he had a conversation with some college students. Listen in. Whole nation is waiting for the 23rd of August when Chandrayaan 3 is going to land there on the moon, and we have with us the students of SP Smart School, those who have gathered here to definitely support the scientists of our country, the government of our country, those who are continuously trying to make this mission success, because this is a dream of our country that the tricolor is going to unfurl over there at the moon, and that is going to be a dream come true mission for the country. Let's speak to the students over here, that what they have to say and how this Chandrayaan mission is going to change the future of the youngsters in the country. I would like to ask you that how do you see this mission Chandrayaan 3 and how it is going to change the youngsters' future? So Chandrayaan 3 is just not a mission. It is a dream of our Indian scientists which have come true on 14th of July after the soft launch of Chandrayaan 3. But sir, the date 23 is a golden date for our Indian future, that the Chandrayaan 3 will positively land on moon's south pole, and Chandrayaan 3 is continuously sending us different pictures, pics and new locations of moon. So you are continuously tracking it? Yes, we are continuously tracking it by the means of news channels, by the means of journals, newspapers. So how this is going to change the future of the youngsters, especially in the country? This will not change the future for the country, but ये जो है हमारे वर्ल्ड के अंदर जो हमारी एक इमेज थी पहले कि इंडिया मतलब कुछ नहीं आता इंडिया को, उनको हम दिखा देंगे कि हम भी लैंड कर सकते हैं। मून पे जो है चांद पर जब तिरंगा लहराएगा वो कितना बड़ा समय होगा आप सबके लिए? उस टाइम हम सर उठा के बोल सकें कि हमने भी कर दिखाया है। आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है ये मिशन कंप्लीट होना, सक्सेसफुल होना? मिशन तो बहुत ज़रूरी है, देखा जाए तो मतलब पहले इंडिया ने अपना मतलब तिरंगा चांद पे नहीं लहराया है, ये पहली दफ़ा होगा, हमें बहुत प्राउड फील होगा, मतलब जब हमारा तिरंगा चांद पे होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। We have seen that the students, they were not basically focusing on the science in the past, but this has changed nowadays. Why it is happening, how it is happening? So actually India has been changing now. Now there is a quite of we can say sight on these sciences also, because these are untouched previously. Now it will create a new horizons for the students, and it will create a new inspiration, a source of new inspiration for the students. Or if it successfully lands on the moon, we will become the fourth country, and it will be a very proud moment for us. Definitely, and this basically not only inspired the students but also the people of the country, because they are also going to get proud after the soft landing of Chandrayaan 3. क्या लगता है how this is going to help you students in the coming future? चंद्रयान 3 हमें अवेयर कराएगा नए करियर ऑप्शन के बारे में, और हमें पहली बात तो नॉलेज देगा कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्या हुआ, क्या टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व थी। आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है बच्चों के भविष्य के लिए जब ये चंद्रयान 3 लॉन्च हो जाएगा और सक्सेसफुल होना, क्योंकि मिशन 2 जो था वो कहीं ना कहीं हर्ट कर गया था, मैंने तब तस्वीरें जो थी लोग बड़े इमोशनल हो गए थे, इस बार क्या समझ रहे हैं? सर इस बार वी आर श्योर दैट वी विल गेट सक्सेस, एंड दिस इज़ नॉट ए शॉर्टी, वी विल बिलीव इन दैट। तो ये डेफिनेटली कि शॉर्टी डेफिनेटली है कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। 23rd इज़ ए गोल्डन डेट, एंड इस डेट को हमें जो सक्सेस है वो ड्यू टू द ब्लेसिंग ऑफ ऑल गॉड्स हमें ये सक्सेस मिल जाएगी। बेसिकली अब बच्चे इस चीज़ पे भी
फोकस कर रहे हैं कि हम साइंटिफिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें। जैसे IAS के लिए बच्चे फोकस करते थे, KS के लिए करते थे, इन प्रोग्राम्स में काम आते थे। मेन टू से साइंटिफिक चीज़ों को लेकर साइंटिस्ट की तरफ आना, ये चीज़ें बच्चों को कम लगती थी। बट जैसे ही ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये चीज़ें जो बताई जाती हैं ऑन न्यूज़ चैनल्स, ऑन जर्नल्स, इससे बच्चे अवेयर होते हैं और बच्चे भी फोकस करते हैं कि वो भी इन चीज़ों को पॉजिटिवली ले और अच्छा फोकस करें। चंद्रयान को देख के लगा कि कहीं इस फील्ड में भी करियर बन सकता है। जी बिल्कुल, ये बहुत इंस्पायर करता है यूथ को कि आगे वो साइंटिस्ट एज अ साइंटिस्ट अप्लाई कर सकें इस जॉब के लिए और अपने देश को सर्व कर सकें, अपनी मदरलैंड को सर्व कर सकें। ये तिरंगा मैं देख रहा हूँ आप हाथ में पकड़े हुए हैं, क्या लगता है ये तिरंगा अब चांद पे पहुंचने वाला? जी सर, 23 को हम पहुंचा देंगे चांद पे, बिल्कुल। Just see, you know what they are saying. They clearly says that on 23rd of this August, this tricolor is going to land on the moon, and definitely it is going to be a proud moment for all over the country, and they are going to get this mission done. Scientists, they are supporting the scientists of the ISRO, those who are continuously basically working round the clock to make it success. With Manti Chandrayaan, NewsX, Jammu. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.